Hello everyone, this is Vipul Purohit and once again I welcome back you on this YouTube channel. My dear friends, we are discussing the series of videos which are including the topic of solutions. So today I am here with you discussing about the relationship between the composition of vapor and composition of solution. So here we go. So my dear friends, when we talk about the relationship between the composition of the vapor and the composition of the solution, we first of all consider the most simplest solution, and that is the binary solution, that is this, containing A as well as B. Now point number two is we assume that YB is going to be the mole fraction in case of a vapor phase, whereas XB is going to be the mole fraction in the solution phase. Alright. Now according to Dalton's law, we have YB is equal to PB upon P. Okay, डाल्टन लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का वो है एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर. ओके, पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो. So according to Raoults law, which specifically talks about the formula for partial pressure. So what we have is, it is a mole fraction of that component multiplied by the vapor pressure in its pure state. So XB P naught B. This is according to Raoults law, the partial pressure, मतलब ये वाला part, the numerator part, okay, is going to be evaluated by means of what? Raoults law, by this equation number 1. Now, similarly, we have the another component A, क्योंकि मैंने binary बोला है. So we go for another component A, so which says PA is equal to XA into P naught A, Raoults law के हिसाब से. फिर previously जब Raoults law का मैंने वीडियो अपलोड किया था, तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि the total pressure of the solution is the summation of the partial vapor pressure of all the components present in the solution. तो इस तरीके से हमें जो एक्सप्रेशन मिला था वो था P naught A plus XB, that was common, P naught B minus P naught A. Now let me tell you, my dear friends, that we got this expression by expressing XA in terms of XB. If you remember, I told you that the total mole fraction is always equal to 1. So as a result of which, we say that XA is equal to 1 minus of XB. तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिला था. सो अकॉर्डिंगली नाउ YB, उसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, दैट इज हमें निकाला था Raoults लॉ से, XB into P naught B divided by the total vapor pressure, that is P naught A plus XB P naught B minus P naught A through this particular expression. तो ये हम लोग ने ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ओके, सो YB इज द मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर हमने Raoults लॉ से निकाला और टोटल प्रेशर हम लोग ने ये एक्सप्रेशन से निकाला. ना अगर हम एज्यूम करते हैं कि XB इज 1, मतलब XA है ही नहीं, ओके, तो B is in a pure state. So if XB is equal to 1, so what will happen is, if I open this bracket, तो ये P naught A और minus P naught A कैंसिल हो जाएगा. XB 1 है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी 1 है. अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचेगा? P naught B, क्योंकि P naught A और P naught A तो कैंसिल हो गया. XB तो 1 है, तो बचेगा P naught B. इधर भी न्यूमरेटर में XB तो 1 है, तो बचेगा क्या? P naught B, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा. और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? YB is equal to 1. Okay, similarly we can have the another expression also. अब यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिला था ये वाला ऑन द बेस ऑफ Raoults लॉ, वो हमें तभी मिला था जब हम लोग ने XA को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ XB as 1 minus XB. Now what we do is, we are going to express XB in terms of XA as 1 minus of XA. अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत छोटा सा हिंट दे देता हूँ, एंड दैट इज कि जब हम चेंजेस करेंगे, ओके, ये एक्सप्रेशन में और फिर ये वाले एक्सप्रेशन में,
तो बहुत सिंपल बता देता हूँ कि जहाँ पर ए है वहाँ बी करना है और जहाँ पर बी है वहाँ पर ए करना है। यानी अगर आपको ये पहला वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो सेकेंड वन इज वेरी इजी। ओके, तो वाई बी है तो उधर क्या करने का वाई ए, एक्स बी है तो उधर करना है एक्स ए, पी नॉट बी सो इट इज पी नॉट ए। ना यहाँ पर इन द डिनोमिनेटर इज पी नॉट ए सो बिकम्स पी नॉट बी, प्लस एक्स बी है तो ये एक्स ए हो गया, पी नॉट बी है तो ये पी नॉट ए हो गया, माइनस ऑफ पी नॉट ए सो माइनस ऑफ पी नॉट बी। Okay, this is what I'm telling you in simple part. So you only understand the first part, that is this. The second part becomes very easy. Okay, and that is A becomes B and B becomes A. Now once again, we consider A to be the pure state. So B है ही नहीं वहाँ पर. So XA is equal to 1. अब ये XA 1 है तो P नॉट B और P नॉट B दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ओके, ये XA और ये XA दोनों 1 है और पी नॉट ए न्यूमरेटर में पी नॉट ए डिनोमिनेटर में है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमें 1। तो यहाँ पर एक्स बी 1 था तो वाई बी 1 है, तो वैसे यहाँ पर अगर एक्स ए 1 है तो वाई ए इज 1। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ फाइनल एक्सप्रेशन वी गो फॉर इज कि वी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स। सो वाई ए अपॉन वाई बी विल बी इक्वल टू व्हाट? अभी डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मैंने बताया था आपको okay कि YA is equal to PA upon P and YB will be equal to PB upon P. तो YA divided by YB will be equal to what? PA upon P into P upon PB. ये तो आप जानते ही अच्छे से कि when you divide it और उसको फिर मैंने multiplication का साइन डाला है, so when I convert that division into multiplication, then numerator becomes denominator and denominator becomes numerator. So accordingly, the P and P, this 2P, total pressure gets cancelled. So what happens is we have PA upon PB. Now what is that PA upon PB? It is the ratio of the partial pressure of A to B. Now we apply Raoults law. So according to Raoults law, that is from expression 1 and 2, what we have PA, a formula है XA P naught A, that is this I am talking about. And similarly, we have PB, that is going to be XB into P naught B. Alright, so this is what we get finally when we talk about the ratio of the vapor pressure with respect to the two components A as well as B. So I hope, my dear friends, you have understood this relationship between the vapor pressures, okay, as well as when we consider in terms of solution as well. Okay, so this was it with respect to this particular session. We'll see you next time. Till then, take care. Bye-bye.